Welcome back to the first video of the Infosys. And if you are here, I know आपने शायद TCS वाला भी 1000 must do question series का playlist देख लिया होगा. If not, please go through those videos as well. Now, as you know, it's a 1000 must do question series. So the numbering is starting from 7001 and it will go up to 8000. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, what is it? Which of the following statement is the contrapositive of the given statement? चलो, कोई भी statement आपके पास given होगा, it is always divided into two major parts. And what are the two major parts? One of them is a hypothesis, which is denoted as H, and based on the hypothesis we have a conclusion, which is denoted by C. यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हाइपोथेसिस है इफ देयर इज अ स्टॉर्म. कंक्लूजन क्या है? देन ऑल न्यूज चैनल विल ब्रॉडकास्ट द न्यूज. चलिए लेट्स सी कॉन्ट्रापोजिटिव पे आते हैं, बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स क्या होगा. कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं, इट इज रिटन एज इफ हाइपोथेसिस देन कंक्लूजन. कॉन्वर्स इसका होगा, यू राइट द कंक्लूजन फर्स्ट, इफ कंक्लूजन देन हाइपोथेसिस. इनवर्स क्या होगा इसका? कुछ नहीं, टेक द नेगेटिव ऑफ हाइपोथेसिस एंड देन द नेगेटिव ऑफ कंक्लूजन. जैसे अगर मैं इस स्टेटमेंट के लिए बात करूं तो इसका इनवर्स स्टेटमेंट होगा, इफ देयर इज नो स्टॉर्म all the news channel will not broadcast the storm. Converse की बात करूं तो if all news channel will broadcast the storm, then there is a storm. Converse. Now coming on to our question, that is, what is contra positive of this given statement? तो ये ना यार mixture of converse and inverse बोथ है. इसका मतलब ये है आपने कॉन्वर्स भी करना है, दैट इज कंक्लूजन देन हाइपोथेसिस, एंड देन इसका इनवर्स भी करना है, दैट इज टेक द नेगेटिव ऑफ दिस. सो इट वुड बी समथिंग लाइक इफ ऑल न्यूज चैनल डू नॉट ब्रॉडकास्ट. सो इफ ऑल न्यूज चैनल डू नॉट ब्रॉडकास्ट देन देयर विल बी नो स्टॉर्म. There will be no storm. So C, H, negative, negative, option A fits in perfectly. चलिए, moving on to the next question. 7002, second question of our 1000 must do series. The area occupied by M and OPQ in a pie chart are in this ratio, that is 2, 3, 4, 5, 6. P will have how much degree central angle? P कितने नंबर पे? 1, 2, 3, फोर्थ नंबर पे. फोर्थ नंबर पे मुझे फिफ्थ दिख रहा है. सो P would be equal to 5 parts out of 2, 3, 4, 5 and 6 into 360 degree pie chart. So 5 upon how much is this? 6, 4, 10, 5, 10, 20 into 360. This is 4 times and this is 90 degrees. Option B fits in. Moving on. Next. If the observations are 3, 7, 16, 56, 79, 86, y and y plus 3 and these are all in increasing order. इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू 86 या 86 से बड़ी है, that is for sure. और इसमें जो भी वैल्यू उसमें 3 ऐड कर दोगे तो और भी बड़ा वैल्यू है. दीज आर ऑल इन असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये गिवन है. रेंज ऑफ द डेटा भी गिवन है एज 108. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज? इफ आई आस्क यू, रेंज इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू हियर अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन? y plus 3. व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू? 3. और रेंज क्या है? 108. डन. प्लस 3 minus 3 gone. Therefore y is equal to 108. That is there in option number D.
चलिए मूविंग ऑन. रेंज याद रखना है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. नेक्स्ट, अ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक सिलोलिज्म. बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एंड बहुत ही मजेदार भी है. फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग, लेट्स सी. एक लाइन यहाँ पे ध्यान रखना. इट इज ऑलवेज गिवन, अज्यूमिंग ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. मतलब वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन रियलिटी और नॉट मुझे चेक नहीं करना है. डोंट चेक द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज ट्रू. लेट्स सी. सम फ्रूट्स आर पपायास. कैसे ड्रॉ करूंगा? सम ए आर बी. सम फ्रूट्स आर पपायास. All the papayas, all of this part is inside. All papayas are lemons. And no lemon is a guava. This is what we have. All lemons are fruits. All of these lemons are fruits. Is it? Some part is fruit, not all. So this is false. Some lemons are papayas. Some of the lemons are papayas. All papayas are lemon. All A are B. Therefore, some B are A. That is definitely true. Always true. Some B are A. Only conclusion 2 seems to follow. Option C is the correct fit here. Now, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा सफिशियंसी. अब ये जो डेटा सफिशियंसी है ना, ये सबसे मजेदार टॉपिक है बिकॉज इट कैन हैव द क्वेश्चन फ्रॉम LR लॉजिकल रीजनिंग. इट कैन ऑल्सो हैव क्वेश्चन फ्रॉम QA क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सो डेटा सफिशियंसी है क्या? रीजनिंग का टॉपिक है, यस, विच कैन हैव क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड इट्स अ मेथड or structure basically, or a format of asking questions. इसको तरीका क्या है? Please learn the approach of solving a data sufficiency question. First you start with the question part. In which month of the year was Avishek born? देखो इसका एक definite answer आएगा ना, out of the 12 months. आपने सिर्फ स्टेटमेंट 1 पे फोकस करना और आंसर करने की कोशिश करनी है. चलो, अभिषेक वाज बोर्न आफ्टर जनवरी बट बिफोर जुलाई. आफ्टर जनवरी इज फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून. बिफोर जुलाई इज जून. 5 महीने. डेफिनेट आंसर हुआ क्या? नहीं हुआ तो क्रॉस लगाओ. नेक्स्ट, वापस से क्वेश्चन पढ़ो. This time, forget about this part. This does not exist and try to answer it using the second statement only. Let's see. Born after May, that is June. Before October, that is July, August, September. 4 महीने आ रहे हैं, सिंगल आंसर नहीं हो रहा है. जब आपके पास दोनों क्रॉस आ जाए, देन यू हैव द लिबर्टी ऑफ कंबाइनिंग दीज टू. कंबाइन करोगे, आपको एक कॉमन मंथ दिखेगा, दैट इज जून. एक डेफिनेट आंसर आ गया. कब आया? व्हेन यू हैव कंबाइंड these to get to the solution. So both statement needed to answer the question. Option B fits in perfectly, and that is how you solve a data sufficiency question. Moving on. The frequency of an observation cannot be a decimal value. It should always be counting numbers. These are all possible values. This is not a possible value, so this is my answer. फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की कितनी बार वो अकर कर रही है, इट शुड ऑलवेज बी अ काउंटिंग नंबर, नॉट डेसिमल्स. 15 tennis players take part in a tournament. Each player plays twice with each of its opponents. How many games are to be played? देखो, this is a question based on the concept of combination and not permutation. और इसे समझते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं. मान लो टीम इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. कितने मैचेस प्ले हो रहे हैं वही पूछा जा रहा है, कितने गेम्स, हाउ मेनी गेम्स आर बीइंग प्लेड. टीम इंडिया प्लेज अगेन ऑस्ट्रेलिया, 1 मैच. ऑस्ट्रेलिया प्लेज अगेन इंडिया, द सेम मैच ना, गेम तो एक ही हो रहा है. इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, इट्स द सेम सिनारियो. अब ऐसे सेम सिनारियो और कहाँ पे होंगे? सपोज यू आर शेकिंग हैंड्स विथ समवन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ हैंड शेक.
or a question of hug. Is this clear? You are hugging someone. आप उसे हग करो, वो भी आपको हग कर रहा है. It's the same scenario. Games, same scenario. एक मैच प्ले हो रहा है ना. We are not playing two different matches. अब क्वेश्चन, तो इनको सॉल्व करने का तरीका होता है, द फॉर्मूला इज NC2. नंबर ऑफ हग्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ मैचेस. यहां पे अगर मैं NC2 करूं तो आई बी गेटिंग इट एज 15C2. बट ये बोला जा रहा है एवरी प्लेयर प्लेज ट्वाइस, सो इनटू 2 कर दो, and that is my required solution. Now how do I break 15C2? Simply I write it as 15 into 14 by 2 into 1 into 2. This goes out. 15 into 14 is 210. That is the answer. Please work out on the concepts of permutation. कब लगेगा ऐसे केसेस में. मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ. मान लो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आर्टिकल, एनी ऑफ द आर्टिकल, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे ए ने अगर आपको चॉकलेट दिया, क्या मैं ये बोलूँगा बी ने भी आपको चॉकलेट दिया? नहीं. This case we use permutation NP2, wherein it is same, that is A giving a chocolate to B would be same as, that is A shaking hands with B is same as B shaking hands with A. Same scenario है, we use combination. ध्यान रखना, इन चीजों पे फोकस करना. Okay, moving on. Next one. The R hand lies between 3 and 4. The difference between the hour and minute hand is 50 degrees. It is also given. Required angle. What are the two possible timings? Okay. Time is always given as angle 1 plus minus angle 2 into 2 upon 11. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. अब देखते हैं A1 और A2 क्या है. A1 is the angle 1 which is the initial angle, and it is always the start of an hour. So at 3 और 4 बोला है तो at 3 बजे इनिशियल एंगल क्या होगा? 90 डिग्रीज. ओके. A2 is the required angle. What is the required angle? बोल रहा है क्वेश्चन में 50 डिग्रीज. चलिए पुट करते हैं. 90 प्लस माइनस 50, 2 upon 11. What are the two possible values? 90 plus 50 into 2 upon 11. 90 minus 50 into 2 upon 11. 90 plus 50, 140, 140 into 2, 280 by 11. One of the timing. The other timing is 90 minus 50, 40, 40 into 2 is 80, 80 upon 11. The other timing. Done. These are the two timings. Moving on. How many ways can one arrange the word education such that the relative positions of the vowel and consonant remains the same? Education. What are the relative positions of vowel? So you basically count the number of vowels. 1, 2, 3, 4, 5. मतलब इसका ये है, रिलेटिव पोजीशन का मतलब है द वॉवेल्स कैन अरेंज अमंग्स दीज 5 पोजीशंस ओनली. ये आपस में इंटरचेंज होंगे लेकिन इन्हीं पोजीशंस में इंटरचेंज होंगे. तो कितने वॉवेल्स हैं? 5 वॉवेल्स हैं. कितने पोजीशंस हैं? 5 हैं. तो 5 फैक्टोरियल इनटू द कॉन्सोनेंट्स वुड बी अरेंजिंग इन how many ways? 1, 2, 3, 4. 4 positions. So 4 factorial. What do we have? 5 factorial is 120. 4 factorial is 24. 120 into 24. What do we have? 120 into 2 is 240. Add them up. 2880 is the correct answer here. Chaliye, moving on to the next question and the last of the set, because what we'll do is we'll take up 10 question set with every 1000 question that we are doing. We would be doing it in 10 question set, 10 question set, 10 question set.
So this was a set from 7001 going up to 7010. Next set would be from 7011 and to go up to 7020. 10 question set. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. कुछ नहीं समझ में आ रहा है. स्टार्ट बाय टेकिंग द डिफरेंस. 3, 5, 9, 17. मुझे डिफरेंस मिलेगा नेक्स्ट वाले का, मेरा आंसर आ जाएगा. अच्छा 3, 5, 9, 17 कुछ नहीं समझ में आ रहा है. बट लेट्स सी, कैन आई राइट इट एज 2 to the power 1 plus 1, 3. This can be written as 2 to the power 2 plus 1, that is 4 plus 1. Next can be written as 2 to the power 3 plus 1, 8 plus 1, 9. 2 to the power 4 plus 1, 17. Next 2 to the power 5 plus 1, that is 32 plus 1, 33. 35 and 33 is 68, and that would be the next term of this particular given series. I hope this was clear, the 10 questions. Any doubt in any of the questions, feel free to comment in the chat box. Chaliye, take care. Goodbye. Thank you everyone. God bless you all. See you all in the next video.